we can become the best version of ourselves? इसका मेरा सोल्यूशन थोड़ा सा फिल्मी है. बताओ. फिल्मी we like filmy. एक चुटकी डिस्कम्फर्ट. What's that? Because you've sat with so many high performers, what's that one skill that's, or say multiple skill sets that separates them from the ordinary people? The ability to get back on the game. Because लोगों को जनरली गिरने से डर लगता है. जिनको पता है अगर मैं गिर भी जाऊँ तो I'll come back in the game, they will not be concerned about falling. But ये calmness under pressure कैसे किया जाए? This is the technique I would like to teach you. Sure. तो बड़ा strong technique लग रहा है यार. How to not let emotions get the better of you in this process? Tell yourself कि emotions right now it's my truth, but that's not reality. Our mind is like a Google search. अगर आप कहोगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, then it will give you all reason of क्यों हो रहा है. Yeah. अगर आप कहोगे कि ये हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, it will give you all the reasons, so many of them. So I created this technique called growth mode. Talk about it. I've been seeing a lot of your work around it. So I ask people to I just want to set the context right for the Yes. audience who's listening to us. This episode is definitely going to be around high performance, certain behavioral changes that one can make to really become the best version of ourselves starting this year. It's not too late. 2 महीने almost खत्म हो गए हैं, but we still have 10 months to go for this year and the next 30, 40, 50, 60, 70, 80 years that we have in ourselves. So just want to understand from a high performance coach as to how we can become the best version of ourselves, because sometimes there are a lot of doubts. Sometimes maximum time I think, and I speak for the general audience, like I'm the audience today, as always. Okay. So I also I play like you're the teacher and I play a student who's absolutely mediocre in life, which is like a lot of people who think that they are mediocre and उनको achieve करना है, उनको clarity चाहिए, उनको बहुत कुछ करना है. Maybe they're doing some part of it right, or maybe they feel they're doing right. You never know. So how to sort of tackle those situations? So the idea is I'm a student, you're a teacher, and we'll decode high performance, we'll decode some behavioral aspects. ठीक है. तो अदिति मेरे को बताओ कि what exactly is high performance? When we say high performance, what exactly is high performance? Many times when we start a task or we want to build a career or you have dreams, wherever you look at it, if I want to build a skill set required for it, mindset required for it, and I say, hey, this is my project, I have these things to do, but can I really build the skill that makes it more efficient, easy to do, easy to jump off whenever I want to? And at the same time, if I look at my other part and say, oh, do I have the mindset to sustain under pressure, to do what is required, to accept my mistake, not take them personally? All of these things, the combination for me of the skill set and mindset that I can call upon on a cue is a high performance. अच्छा. जैसे बहुत सारे लोग खेल लेते हैं, but when you say an athlete, somebody who can they can guarantee when they are on the court or they are on the field, they will do something that they can count upon on a cue. जैसे जो situation है, they have so much of training, so much of confidence, so much of mental preparation that जब जहाँ जो ज़रूरी हो वो कर सकते हैं. And in that process, if they fail, if they make a mistake, if they claim something, and if they absolutely have situation which is a failure, they stand there and say, okay, I own up to it. I'm gonna make the change. I'm gonna look at it objectively. I'm gonna do it again. So that whole part of having the willingness to do all of it and training for it is a high performance mindset. Got it. So when it comes to training for having a strong mental caliber and having a strong mental mindset कि यार चलो पता है कि ये करना है, what's the most common problem that one faces while tackling this mindset? Yourself. है ना? That's the biggest problem. Because आज हम ये कह रहे हैं, then we change it, and then we change it, then we change it. So you don't trust yourself that when you say something, you'll do it. क्यों नहीं हो पा रहा ये? बहुत लोगों से नहीं हो पा रहा है, अदिति, let's face it, including myself. I'll be very honest.
I try and claim certain things कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. But there are roadblocks. Maybe certain roadblocks that are in my control, certain roadblocks that are out of my control. And out of my control को मैं छोड़ देता हूँ. मैंने कहा ठीक है भाई, तू देख ले, तेरे को जो देखना है, करवाना है, करवा ले. In my control भी certain things that I'm unable to do. And when I sort of think about it, I realize कि यार काम क्या मैं enough कर रहा हूँ. Can you give me an example when you say I'm unable to do? What does that mean? Okay. Say for example, this year somebody asked me कि यार तेरा resolution क्या है? मैंने उसको बोला कि resolution में मैं मानता नहीं हूँ. I really don't believe in resolutions. Me too. ठीक है, perfect. तो उसने बोला कि ठीक है whatever. तो what is one thing you want to do this year? मैंने कहा personally speaking, I really want to, because I enjoy sports so much, I really want to do more adventure sports this year. Like I really want to do more adventure sports. She's like, what kind of adventure sports? That's great, but what kind of adventure? मैंने बोला I want to do polo, I want to do horse riding, I want to do kite surfing, I want to do advanced level scuba क्योंकि beginner level scuba license है मेरे पास. I want to do advanced level scuba. I want to do advanced level surfing as well. Beginner level surfing license भी है मेरे पास. तो I want to do advanced level. Impressive. हाँ, तो I want to do advanced level scuba surfing also. So she's like, okay. Now, cut short to 2 months later, which into the year, I have not done anything. I have not even researched about it. So, क्या मेरे दिमाग में है कि मेरे को ये चीज़ें करनी है और मैं एक्शन में नहीं उतार पा रहा हूँ. So, what precedes action? Is it clarity? Is it action itself? Is it like the first step? What is it? Why is it that people are unable to sort of work to their potential? So first of all, it begins with clarity. We are distracted all the time. Okay? We want to work on this, and you definitely, in your case, if you have done all these base levels, you are committed. You know how it feels, you like it, and that's why you're asking that. Yeah. You know, so it's not like koi aisi baat keh di. You mean it. Correct. But when you take a moment and you look at it, when I mean this, and when I want to observe many my behavioral patterns, you're like, I'm not committing to it. पर clarity नहीं है ना पहले stage पे. Do I really know what I want? Say for example, मेरे को पता है कि मेरे को advanced level scuba करना है. Okay. या फिर for example, क्योंकि let's not take the scuba example क्योंकि मैंने already beginner level कर रखा है, तो I at least know how it must feel. Let's take something very alien that I have not done. For example, horse riding. Okay, before we go there, when I have all of these options, and that's what I'm saying, we are so distracted, we have Correct. all these options, you tell your mind, मुझे ये सब करना है, इसमें से कुछ ना कुछ कर लूँगा. When you have clarity, you say, I want to do this first. Okay. So that clarity in terms of like, I just want to give another example. Yours is very specific. But like, for example, people are like, I want to improve, just a resolution mein hota hai. People are like, this year I want to improve my health. I want to like work on my relationships. I want to do that certification so that like there's so many things. And we have 12 months to do it. But what do you want to do first? Okay, the very moment I say, this is my priority, then I tell myself two things. What do I want to do? And why do I want to do it? Got it. The So very इसको अगर, sorry, I'm just cutting you, just letting you know that इसको अगर हम थोड़ा सा contextually, like we're assuming the Indian context. Let's just let the assumption be out there. And B, let's just take examples whenever you can. So whenever you talk about a particular concept or a tool, let's just take examples and explain that concept. हाँ, वही कह रही हूँ. तो जैसे अगर हमारे रेजोल्यूशन में बहुत सारी चीजें हैं, तो हमारा मन तो होता है, but only having that mind will not work. For that desire won't work. If I want to really take action, if I want to really jump into it, then what do I need to do? I need to decide that this is what my priority is. And then after what, the really important question, why do I want to do this? So what precedes why? I think so. Especially with this behavior. If basis the stories you've told me so far, one underlying theme I've seen is curiosity. Huge curiosity. है ना? And not perfection. गलतियां करने का freedom, oops, I shouldn't have done it. कह के life को वापस जीने का freedom is something that I have learned from these high performers. तो You know, I चुल है मतलब. हाँ? चुल है चीजें करने की. चुल है और वो बहुत important part है. अगर वो curiosity खत्म हो जाए, तो हम लोग सभी तमाशा वाला वेद बन जाते हैं. हाँ, that is also true. है ना कि वो That बस is also true. उठ रहे, ब्रश कर रहे, ऑफिस जा रहे हैं, फिर वही कर रहे. वो तमाशा का वेद का second version, वेद 2.0, is that high performance mindset?
Could be, but see, what he did is he experimented and he explored this part. Correct. High performance is calling that on a cue. Hmm. मतलब इसको अगर आप थोड़ा सा और ब्रेक जैसे डाउन मेरा कर एक पाए. दोस्त है जिसने कहा कि मैं अपने करियर से ब्रेक लूंगा और इसको काम करूंगा. So he tried it for like 2 months and then उसको पता चला कि बहुत मुश्किल है. Then he said नहीं मैंने कमिटमेंट किए, मैं और 2 महीने ट्राई करूंगा, फिर और 2 महीने ट्राई करूंगा. सो वेद का जो वर्जन है इस एक्सप्लोरेटरी वर्जन. करेक्ट. कि ट्राई करके देखते हैं. फिर मुझे करना है, मेरा पैशन है, पर पैशन सिर्फ काम नहीं करता ना. पैशन एक इमोशन है जो आपकी गाड़ी शुरू करा सकता है. पर गाड़ी को चलते रहने के लिए वो मैकेनिज्म लगेगा जो इंजन है, फ्यूल है, उसके लिए स्किल सेट और माइंडसेट चाहिए. हमारे यहाँ पे बहुत कहानियों में पैशन को इतना इंपॉर्टेंस दिया है that I have seen so many people who just fall flat on their faces. Correct. because they are passionate people. बट पैशन के बाद की कहानी क्या है कि उसके लिए जो स्किल सेट चाहिए वो तो तभी बनेगा जब जिस चीज़ का डर लग रहा है वो चीज़ अब करो. फिर पता चलेगा कि ये सारा बिजनेस मैंने शुरू तो कर दिया पर ये 3 चीज़ें बिल्कुल नहीं आ रही है. देन यू लर्न दोज थिंग्स, यू हायर पीपल, यू मेक दोज मिस्टेक्स. ये करने के लिए जो स्किल सेट है वो कर करके सीख के मिलेगा. मेरे को ना अदिति, सो फॉर एग्जांपल देयर आर अ फ्यू थिंग्स, जैसे टिपिकल इंडियन माइंडसेट जो है विच इज करना है, बट कई बार हम करना है वो सही है, वो क्लैरिटी है, बट देयर आर लॉट ऑफ डाउट्स कि अरे यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अरे नहीं हुआ तो. सो देयर आर लॉट ऑफ डाउट्स, लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन कि अरे यार कैसे करे, क्या करे. सो हाउ डू यू बिल्ड दैट माइंडसेट, हाउ डू यू बिल्ड दैट क्लैरिटी कि ठीक है कोई नहीं, ट्राई किया नहीं हुआ, इट्स अ पॉज, इट्स नॉट अ फुल स्टॉप, इट्स अ सेमीकोलन, इट्स नॉट अ फुल स्टॉप. तो उसको है ना, उसको थोड़ा सा मतलब ठीक है पॉज, ब्रेक ले लेते हैं, खत्म नहीं करते हैं, पन्ना पलटा देते हैं, किताब बंद नहीं करते हैं. दैट्स द आइडिया, है ना. तो हाउ डू यू बिल्ड दैट माइंडसेट वेयर यू आर लाइक कि ठीक है चीज़ें नहीं चल रही ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपको शुरू करना पड़ेगा. इसका मेरा सोल्यूशन थोड़ा सा फिल्मी है. बताओ. फिल्मी वी लाइक फिल्मी. एक चुटकी डिस्कम्फर्ट. It's my favorite line. एक It's चुटकी a tool. discomfort. It's a part of my all modules that I teach. So, एक चुटकी discomfort is where you say कि मुझे पहाड़ चढ़ना ही नहीं. I want to know कि मैं जहाँ हूँ वहाँ से एक चुटकी discomfort क्या है. I was listening to this very interesting interview. One of my favorite interviewers or conversationalists on the internet is Nilesh Mishra, and his show called The Slow Interview is something that I really, really enjoy. So Bassi was there, Hanwar Singh Bassi was there, and I think they had a conversation जहाँ पे नीलेश सर ने पूछा था कि यार ये क्यों कर रहे हो, या ये आर्ट से कब प्यार हुआ, समथिंग ऑन दोज लाइन्स. एंड बस्सी सेड पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं. And this is after Bassi's claim to fame कि he's a comedian and he's acted in a film, etc. But primary claim to fame is comedy, and he's done everything. But abhi and Bassi is very nonchalant about it, very candid about it. He's like यार पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं. मतलब हाँ ठीक है लॉ कर रहा था. पर इसीलिए जब तुमने कहा कि स्टार्ट विथ वाई, मैंने कहा बहुत ब्यूटीफुल टूल है, पर कई बार लोग आंसर नहीं कर पाते उस वाई का. तो ऐसा नहीं कि उसको क्लैरिटी नहीं है. हाँ. उसका व्हाट बहुत क्लियर है. वो हमेशा अपने आप को चैलेंज कर रहा है, तभी तो यहाँ, बिकॉज वी हैव सीन बस्सी ग्रो Correct, ऑल दीस absolutely, इयर्स, राइट? absolutely. सो एवरी टाइम ही इज चैलेंजिंग हिमसेल्फ एंड ही इज गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल. बट हैविंग सेड दैट, व्हेन यू आस्क हिम कि क्यों कर रहे हो, ही कांट आंसर इट. मोस्ट ऑफ अस कांट आंसर व्हाई. वी नो व्हाट. ओके, सो अगर हम वो आइडेंटिटी बना दे कि हमें यहाँ जाना है, ये बनना है, जो हर एथलीट कर रहा है, और वही प्रिंसिपल अगर आप अपने लाइफ में लगाओ और कहो कि यहाँ पे बनना क्या है. फॉर एग्जाम्पल, योर पार्ट ऑफ आइडेंटिटी इज डांसिंग ऑन द एज. ये नहीं कि तुम एडवेंचर स्पोर्ट्स वाले हो. पॉइंट है कि डांसिंग ऑन द एज इज हु यू आर एंड यू वांट टू डू इट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. एक बार वो मिल जाए ना, और उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को रोज सवाल पूछ के एक्टिवेट करें. Can we get there? It could be first part, the 5 questions that you said, 5 why. Okay? तो कोई भी चीज़, अभी कोई चीज़ बताओ जो करनी है तुम्हें, बहुत मैटर करती है. प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे क्या बताऊँ मैं? Whichever works for you. We can run it for our audience, we can run it for anything. अच्छा, हाँ, okay. तो आप जो भी हो ना. Got it. ठीक है. So for example, मेरे को I've started a new page
called cricket content के ऊपर पेज बनाया मैंने, and this is a challenge I've taken for this year. Like again, मुझे लगा कि करना है कुछ. Okay. It's called Super Over Drama. Okay. ठीक है? Because why not? Of course. And Super Over is a cricket term, and Super Over में बहुत drama होता है, hence Super Over Drama. Done. Now I want to just experiment with the page and create a lot of like exciting cricket content because it's too personal for me. Okay. तो वो करना है मेरे को, वो start. Okay. So now, I want to build super that over page. drama is what you want to do. Correct. Okay. This is your what. Correct. Now, first question. First, why? Hmm. Now, I'm gonna twist it until I find the answer. ठीक है, Okay. In ठीक between. है. So first is, why do you want to run this page? Because I was getting bored with my current page and I wanted the thrill of starting as a newbie. Okay. कि कुछ नया करने का चोला कि नया पेज can I build from scratch? So, Am I able to do something? So basically, you chose a topic that you like, but what you really want to do is see if you have the skill required to build something Correct. over and over and over again. Correct. Why does it matter for you that you build a skill that you can count on? There are multiple whys, Aditi. If I can like include one more answer Please, to that why. please. It's also because it comes very naturally. Like I'm somebody who is glued to the TV screen when a cricket match is on. Even if it's a test match, like I would just wake up at 4 a.m. to watch a test match. Like that's my identity. Okay. Like be like अरे हाँ खेलने के लिए तो उठूंगा ही, but देखने के लिए भी उठ जाऊंगा कि अरे यार if India is playing in Australia and Australia time zone के हिसाब से इंडिया में अगर 4 बजे मैच हो रही है तो मैं उठूंगा देखने के लिए कि भैया अब विराट कोहली आएगा टॉस करने, उस सिक्का उछालने में ही मेरे को मजा आएगा. विराट कोहली बस सिक्का उछाल दे भाई, मजा आ गया. ग्राउंड पे गिर गए, वो क्रेजी हो गया. तो that is I think something I really enjoy doing. So I think it's part of my extended personality कि मेरे को cricket is very like personal to me. So that is also, it comes very naturally, which is why I wanted to have a separate space only where I can just be myself. मतलब I don't record videos very aesthetically there. Like I just take my camera, I just start talking, I just like mumbling कि अरे यार ये हुआ तेरे को पता ये हुआ, oh ये हुआ. It comes very naturally. So I just wanted to have a space where I can just be free and talk about things that I love the most. Okay. That is also why. Okay. So first thing you said that you want to test yourself if you can do this. Okay. Correct. And when I asked that question, you said, "Oh, मेरा और एक why," which is already the third why, that you want to have the freedom of being the person that you are, that nobody knows you through this content. Correct. ये curated है, ये marketing के हिसाब से, इसके हिसाब सब कुछ algorithm के. Correct. But then you want, I want to just be myself. I want to have मस्ती the करना है. freedom Correct. to express things I love. Correct? Why does it matter that you have the freedom? Fourth why does it matter that you have the freedom to express things that you love? क्योंकि I think एक existing पेज पे जो पर्सनालिटी है उस पे मल्टीपल चीजें करने से it can become very haphazard and very like That's it can true. become a mixed That's why you bag. don't want to mix it. I want to, I'm saying, but हाँ. why does it matter that you're going to put efforts, energy in having that free expression somewhere else? Because just like I just love the sport in general and I feel that it deserves a space where I can just talk freely without any Which was your previous one. Okay. without any But why does it matter that you do it? as in why does it matter Yeah, you spend that time, energy and commitment. Why does it matter to you? क्या अचीव हो रहा है, क्या fulfill हो रहा है जिसके लिए ये आइडिया इतना exciting लग रहा है? authenticity I think. So this whole idea, so that's your fourth why. Okay. Correct. And why does authenticity or being seen for not only in this one form, but this, your passion, being seen out there, why does that authenticity matter to you? I don't think I have an answer to that. It's Good, just very good. it's It like, matters. It's who I am. It's just very natural. Matlab, I think authenticity is probably the only reason why I do it. It's because it just comes very naturally. Like if I remove all the cameras and be like कि यार दीपक इसके बारे में बात करना है, मैं 4 घंटे बात कर सकता हूँ. Like and I talk about this when I go to colleges and when I go to like events, when I speak. And lot of young folks come and be like यार दीपक ये कैसे करें and I'm like यार think about a topic that you can talk for 100 hours and that is your bloody niche. Mm-hmm. So
कैन यू राइट अ बुक ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. मतलब छोड़ दे वो सब ज्ञान वाली बुक छोड़ दे. इफ आई टेल यू टू राइट अ बुक ऑन मीम्स, can you write a book on memes? Can you curate 100 memes and make like the meme template? Can this be a book for you? And they're like, yeah, I can do that. I'm like, that's your niche. So now we found your fifth why. That you believe in that whole idea of jumping off and doing things and telling people कि कुछ भी लेके कुछ भी कर सकते हैं. So what you are saying to all these students authentically, at one point you also want to keep testing it. Correct. That's why you are doing all of it. Correct. So it is you are experimenting in authenticity. For example, externally देखा जाए तो I'm going for all these trainings and I'm training so hard. But fundamentally I want to test being a student by breaking my limitations by doing something that I have no clue about. That is what we are achieving. Correct. तो करने के लिए आप जो भी करो. अगर मुझे पता है कि मैं अभी आज क्रिकेट कर रहा हूँ फिर कल कुछ और कर सकता हूँ. Because what I'm trying to deliver is that authenticity and the freedom with it. अगर वो हमें पता है ना तो फिर कोई रोक नहीं सकता. But कई बार ये भी होता है. So for example, and all of this makes sense in the whole conversation because we're talking high performance. Because we're talking कि यार आज मान लो एक पेज रन करना है, बट पेज हो सकता है ना चले, हो सकता है क्या इन ऑल केसेस नहीं चलता. पर अगर जब नहीं चला ना, अगर नहीं चला किसी कारण, करेक्ट, तो यू विल से अच्छा ओके ये नहीं चला, ऐसी कौन सी दूसरी चीज़ है जो मैं नेचुरली कर सकता हूँ जो मुझे ऑथेंटिकली करनी है, तो वो पिकअप कर लोगे. फिर अगर वो तुम्हें लगा कि करने के बाद मेरा मन हो गया आई वांट टू ओनली डू इट फॉर लाइक से 3 months, उसके बाद मेरा हो गया, ठीक है, शुरू किया प्रोजेक्ट, आई गॉट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. वो जो मैं कह रही थी वो पानी पूरी वाले बार का स्वाद, सेटिस्फैक्शन, वो जब हो जाएगा उसके बाद हम अपने आप को पुश कई बार नहीं कर पाते. बट वी थिंक कि एक बार मैंने शुरू किया तो मुझे कंटिन्यू ही करना पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में. You keep testing yourself, and that's why creating these experiments is extremely important. You created another page, or sometimes people say अच्छा ये 100 days के लिए करना है, या फिर हम कह रहे हैं ना high performance, most high performers are constantly experimenting. So when you're talking about the discomfort, it is uncomfortable to go through that whole creating a page, doing it. Efforts तो है, right? You're not challenging yourself drastically, but there are efforts that you're putting and you're saying no, discipline से करूँगा, ये करूँगा. All that discomfort you're going through just to make sure that you deliver on something that matters to you, right? सही बात है. तो यहाँ पे आपको discomfort ढूंढना है. पहली चीज़, choose something that matters to you. You're right. अगर घंटों बात कर पाओ किसी चीज़ पे, अगर वो करने से मन नहीं भर रहा है तो परफेक्ट ही है. पर कई बार आपके काम में, प्रोफेशन में, आपने पैशन प्रोफेशन भी चूज़ कर लिया तो ऐसी कई सारी चीज़ें आएंगी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है. इन दोज एरियाज यू हैव टू टेक देम एंड से नाउ आई डोंट लाइक इट, आई एक्सेप्ट मुझे नहीं आ रहा, ओके, बट आई नीड टू बिल्ड अ स्किल हियर. बिकॉज नहीं आ रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा है. पर हाई परफॉर्मर्स like you have a Kobe Bryant behind. Yeah. And Kobe said something wonderful. Somebody asked him that you are the greatest player. And he was a basketball coach. So he was like, observing Kobe very, very closely. And he said, मुझे तो आपका रूटीन चेक करना है. तो 45 minutes फर्स्ट रूटीन हुआ, उसके बाद 45 minutes दूसरा रूटीन हुआ, सब बेसिक ही करे जा रहा है. And then he's like, अच्छा होगा कुछ. And he saw the next day, same basic what he teaches like the seniors school kids. So then he went up to him and said, I can't stop myself, but your workout is basic. You're the best player in the world. He said, why do you think I'm the best player in the world? Because I never get bored with basics. Sometimes things we don't like to do, just showing up every day, working out, doing things is difficult. But we do it because we are like, that is the level where my everything breaks. तो वो अपने आप को अकाउंटेबल पकड़े रखना इज अ कमिटमेंट पार्ट, जो मुझे लगता है इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट. कि वो कमिटेड ही नहीं है. हम लोगों इफ यू टेल मी that you want to do something or tell someone else that all of it you do it, but most people do not keep the words that they have given themselves. 95% people. And if you can't keep the promise you made to yourself, तो बाकी सबकी कोई चीज़ें मैटर ही नहीं करती.
And this is like the athlete mindset कि यार it is like anybody who wants to build a life that matters to them. वो जो डंके की चोट पे खड़े रह के कहता है कि ये मैंने बिल्ड किया और मैं वापस टूटेगा तो वापस बिल्ड कर सकता हूँ, जो तुम नए पेज से करना चाहते हो, यू लाइक एक बार किया अच्छी बात है, दूसरी बार भी कर सकता हूँ, देन आई नो आई गॉट इट, राइट? The person who can do that is a person who keeps the promises made to themselves. Got it. आसान तो नहीं है, आसान तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पर है, मजा बिल्कुल जब भी आता है तब आसान होने की जरूरत भी महसूस नहीं होती. नहीं. ओहो मैं शायर तो नहीं मगर फिर but so far what we've been able to achieve is understand, get that clarity, understand कि यार if it's not clear, figure out First curiosity which is then the clarity, first C, then clarity which is the second C, and then the commitment. then the commitment which is the third C. या commitment मतलब मैंने एक बार जो commitment कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ भाई. मतलब ये कब तक नहीं सुननी चाहिए अपने आप की, जब तक आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है. If you say so, sometimes for some reason people say इस साल हमेशा वो करूँगा, but if you break it down से पर 30 दिन करूँगा, करके देखता हूँ, then I will decide. ये जो लोग करते हैं कि 75 hard और 100-day challenge or whatever, तो is it because they want to stick to a particular routine for like 100 days, or is it why like, or are they building that skill for it कि यार चल 100 दिन कर सकते हैं? See, कई बार लोग तो अपने आप के मतलब सोशल मीडिया के लिए ही कर लेते हैं, पर वैसे मत करना. बिल्कुल सही बात है. Thank you for calling out people. I am not people. मतलब 75 हार्डवेयर सारे जो पोस्ट बनेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए लोग कर लेते हैं, तो वैसे मत करना. बट इफ यू रियली सिट डाउन एंड से 75 हार्ड was designed for people to have that mindset कि एक ही चीज़ में छोड़ूंगा नहीं, because the rule for 75 hard is जैसे ही आपने वो छोड़ दिया आप day 1 से शुरू करते हो. So the idea is I can't break the continuum. It's not healthy for women, it's not healthy for everybody. So and the way it is designed with a great intent, but it doesn't work for everybody's body and mind. So you don't follow anything blindly. पर इसीलिए हम एक चुटकी डिस्कम्फर्ट करें कि 75 हार्ड जाने से पहले कैन आई डू इट फॉर 7 days, देन आई डू इट एंड देन आई ट्राई इट अगेन. पर हमारी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कहूँगा 7 दिन और मैं नहीं करूँगी या नहीं करूँगा तो अपने आप पे ही विश्वास नहीं हमें. करेक्ट. तो हम लोग कहते हैं नहीं कोई तो पीछे से डॉग लगे ताकि वो भगाता रहे और मैं भागता रहूँ. So I have this analogy that I use a lot, and I will not miss an opportunity to tell that story. Of course, go on. Imagine you and I are sitting here talking, we see a man running. मैंने कहा यार क्यों भाग रहा है दोपहर में, एंड देन वी जस्ट लाइक लुकिंग फॉर रीजंस एंड यू से प्रॉब्ली देयर इज अ डॉग बिहाइंड. हम देखते कोई डॉग वॉक तो है नहीं, फिर हम लाइक प्रॉब्ली देयर इज अ काइट इन द स्काई. ऐसे जैसे हम देख रहे कोई काइट वाइट भी नहीं है, तो जैसे हम बैठे हैं तो ये हमारा दोस्त कह रहा है कि नहीं ही इज़ अ रनर, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ मैराथन. दोपहर में भाग रहा है, हाँ कमिटेड है, हर दिन वो 3 घंटा तो भागती है. सो नाउ व्हेन यू लुक एट दिस पर्सन द एक्शन इज सेम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कि वही एक्शन करी, पर उसका जो मोटिव है, उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो चेंज हो गया, completely different. When you're running away from a fear, you're doing the same action, but your mind is going through this chemical reaction which is all about fear. नहीं हुआ तो डॉग मुझे पकड़ लेगा, मुझे खा लेगा, काट लेगा, and I'm running and you run all the way, but your running does not lead to any shift, any learning. You're just running. और लोग कह रहे हाँ मतलब डर से नहीं भागना चाहिए. इट्स वेरी गुड टू हैव अ गोल लाइक अ कैरेट. द प्रॉब्लम इज जिस दिन हमें वो मिल जाता है उस दिन हम वो बोलते अच्छा मिल गया, ओके वेरी गुड, अभी नाउ आई डोंट वांट टू रन अगेन, इट वाज सो हार्ड, आई डोंट वांट टू डू दिस अगेन. So we have to wait for another great kite to happen, another goal to motivate me, then I will run. But high performance and people with growth mode, which I keep talking about, are the people who say wait, अगर मुझे भागना है, अगर मुझे skill build करनी है, and if I'm preparing a skill, preparing for a marathon, then I'll listen to the music I like. Then I'll go to places where I see this track is good, that track, I will use right shoes. तो मैं अपना experience build करूँगा कि grow तो करना है, पर while growing, while changing, while building that skill, I'm also enjoying the process. तो वो challenge में भी मजा है.
कल मैंने 12 के आज मैं 14 कर सकता हूँ, नहीं हो गया, ओके नेक्स्ट टाइम वापस ट्राई कर सकता हूँ. सो आई एम एवरी डे फिगरिंग आउट हाउ डू आई मेक इट बेटर एंड बेटर बाय बिल्डिंग द स्किल, बिकॉज बिल्डिंग स्किल इज माई ऑब्जेक्टिव. What's that? Because you've sat with so many high performers, what's that one skill that's, or say multiple skill sets that separates them from the ordinary people? The ability to get back on the game. Because you will fail, you will fall, things gonna just get horrible. Can you give me an example? Oh, I have worked with people who went through bankruptcy, people who have gone through divorce at like the peak of their career, जहाँ पे बहुत कुछ stake पे चल रहा है. I've worked with athletes who are like promisingly doing very very well और एक बहुत बड़े game से पहले निकाल ही दिया उनको. And I'm like, whole career was based on this idea and now it's gone. Now, do you still get back in the game? And I have seen, and I'm saying this as a foremost idea because लोगों को generally गिरने से डर लगता है. जिनको पता है अगर मैं गिर भी जाऊँ तो I'll come back in the game, they will not be concerned about falling. They would say, अच्छा गिरेंगे ना, okay ठीक है, I'll get back. So they train themselves to be in the game no matter what. Life का वही तो game है. And how do you build that skill set? Are there questions, like again now let's come to tools. I'm saying the questions here is about building that identity. Correct. Of the future. Correct. Okay. Correct. जो हम कहते हैं ना कि if I have to write a letter to my 20-year-old self, what will I write? वैसे अभी आपकी जो भी उम्र है, just add like 20 more years to it and say if you want to write a letter to, say for example in my case 61-year-old person. कल मैं 30 साल का हो जाऊंगा तो 50 साल. अरे वाह. हाँ कल. हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. थैंक यू सो मच. तो 50 साल. हाँ तो 50 साल के दीपक को अपने में क्या क्या चाहिए आज से वो बिल्ड करोगे ना. So first of all, build that identity. And मान लो वो आइडेंटिटी अभी फिलहाल क्लियर नहीं है, so what do you do then? So then you identify कि कौन सी चीजें जो मैटर करेगी. कैसे मैं तुमसे अभी जितना 40 मिनट्स बात करके I can tell you 4 things about you. बताओ. You always want to challenge yourself no matter who you become. ठीक है. He's also laughing. He's laughing because he knows he's worked with me for a while now. He knows. Okay. It should be called by now. It should be called the Chul R and not the Chill R. It should not be called the Chill R anymore. Anyway, हाँ. Okay, so that's one thing. हाँ. Second thing is you want to make sure कि आप जो भी कर रहे हो उसमें तुम्हें मजा आना चाहिए. एक बार कितना भी पैसा दे रहे लोग, अगर तुम्हें मजा नहीं आ रहा है, then you won't be able to sustain that journey. मस्ती is core to me. हाँ ठीक है. Okay. Correct. So third. ठीक है. नहीं fair. Which is yeah, that's right. कि मैं लिख लेता हूँ अपने आप के बारे में, कहीं भूल जाऊँ. Third point I feel is you want to make sure that you create the impact on other people. ऐसा नहीं कि मैं खुद ही करूँ, खुद ही सीखूँ, मैं सीखते सीखते सिखाऊँ, सीखते सीखते इंस्पायर करूँ. Correct. Okay, so that's the third point. Correct. Fourth thing, I am not very sure, but I'm gonna assess and take a shot at it, is that when you fail, okay, you love to talk about your recovery, your journey. So तुम हर चीज का फॉर्मूला ढूंढना चाहते हो. So besides all of it, you want to have like the formula which you can count on, you can jump on. You can say, अच्छा ये करने से ये result आ ही जाएगा. So it's like, you know, that researcher mindset. You want to have like the research done in your style. ऐसे नहीं कि कोई बता दे कि ये तुम्हें करने से रिजल्ट आ जाएगा. You want to take that, you want to put it to use ऐसे मुझे क्या लग रहा है इसके बारे में. So that researcher mindset, if you don't, even if you become extremely successful, and if you don't do that research, खुद का पर्सनल, तो तुम्हें लाइफ में मजा नहीं आएगा. So मेरे हिसाब से, and we'll check that when you turn 50 by the way. Yeah. You have to write to me. Of course. I will schedule an email to you 20 years from now. Yes. Deepak will send an email to Aditi 20 years hence that this is what has happened. This is what I think should be my identity for the future. So this is for you as well. Write a letter to your 20-year elder self or older self, whatever English that makes sense, as to what identity you want for yourself 20 years from now. And identity का एक बहुत simple सा part है. It's not about the money that you have. It's not about like ये होगा, वो चीजों में नहीं होती identity. सारी जब चीजें मिल जाती है, then you become somebody. Identity is not about your bank balance, it's not about your net worth, it's about your self-worth. It's about how you look at you. Personality basically. Personality, but लोगों की personality आजकल ब्रांड से भी बन रही है, तो मैं इसलिए वो क्लियर कर रही हूँ. एक बार एपिसोड कर दो जिसमें बाल ऐसे उड़ जाए एक बार, ताकि हम एडिटर को बोल के थोड़ा एकता कपूर स्टाइल 3 बार रन कर दें.
But I get it. Like I get Yeah, it in so terms of it's not not the the external. materialistic. It's not the external validation. It's not about कि मैंने World Cup जीत लिया. It's about I've become the player who has the ability to win World Cup. It's not only about like achieving that tag. 19 नवंबर हम फिर भी नहीं जीत पाए. क्या याद दिला दिया थी. Sorry. गलत इंसान को. I'm like छेड़ दिया आपने. 2023 19 नवंबर. रोहित शर्मा भी बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया ने हमारा मूड खराब कर दिया था. Every other moment, every other opportunity we get, we will thrash Australia. That is something we want to do. और thankfully they have not qualified for Super 8. तो मेरे को बड़ा ऐसे उनके लिए सिंपैथी लग रहा है. कुछ सिंपैथी नहीं है. मेरे को बाहर में जाए ऑस्ट्रेलिया. Super 8 से निकलो भाई. Anyway, but I get what you're trying to say in terms of just building that appetite. Of being the person you are. Correct. Yeah, because then you are अगर जैसे वो डॉग या काइट ना भी हो तो भी हमारी जर्नी चलती रहे. Got it. और एक बात कहना चाहती हूँ, हमारा जो इंडियन काम है ना, मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में योग सूत्र में वी कॉल इट स्वाध्याय. ओके स्वाध्याय का 2 मतलब होता है. स्व अध्याय विच मीन्स द वर्ड इज ब्रोकन लाइक दैट, बट देयर आर 2 मीनिंग. वन इज खुद की पढ़ाई और खुद से पढ़ाई. अच्छा. स्व अध्याय की एक तो अध्ययन करो कि अकेले में मैं खुद से डिसिप्लिन होके कर रहा हूँ, विच मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड. बट आई लव द सेकंड मीनिंग ऑल्सो कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, मैं इस सिचुएशन में क्या सोच रहा हूँ, मैं ये क्यों सोच रहा हूँ. दैट इज नॉट ओवर थिंकिंग, दैट इज लुकिंग एट व्हाई एम आई मेकिंग द चॉइसेस आई एम मेकिंग. तो स्व अध्ययन इज लाइक रिफ्लेक्शन. और रिफ्लेक्ट लोग करते ही नहीं है. हमें वक्त ही नहीं देता. फेसबुक, नेटफ्लिक्स, सारे नोटिफिकेशन, हमें वक्त ही नहीं देता कि हम रिफ्लेक्ट कर पाए. हम बहुत बिजी है. इन व्हाट? Most of us, all of us, are busy doing things that are really not very important. I like this line about credit card. Somebody said back in the day ki, oh, credit card is about spending the money that you do not have, to buy things that you do not need, to impress people that you do not like. And sometimes we do the same thing with our choices now. We're spending our time exactly like this credit card definition, to impress people we do not like, to do things that we really don't care about. But it's your life. Correct. Time 4000 हफ्ते होते हैं हमारे पास, सर. There's a wonderful book called 4000 weeks. That's all we get most of the time. If you live by like 74, 76. है ना? तो फिर उतना ही वक्त है हमारे पास. उसमें अगर तुम कुछ मीनिंगफुल करो, कुछ मज़ेदार करो जो तुम्हें कुछ सिखा के जाए, तुम्हें all the things that you said. If you're doing the research, if you're curious, if you are challenging yourself, it won't matter to you तुम क्या कर रहे हो. How to not be perturbed with things, with, say for example, you mentioned one trait of high performers is the ability to come back in the game. And I've seen that with so many athletes, so many sports people, that Kobe Bryant, Mamba mentality, Virat Kohli mindset, MS Dhoni mindset. We've seen that so many times. Because I follow cricket, I have a lot of cricket references, but we've seen that time and again. Like Virat Kohli was never in the game. मतलब bounce back नहीं कर पा रहा. 2016 was his peak year. उसके बाद down. Suddenly you see कि अरे यार, resurgence of that peak Virat Kohli who was there in 2016, who was there in 2014, जो मिचेल जॉनसन को आंख में देके बोलता कि डाल मेरे को, हड्डी तोड़ मेरी, देखता हूँ क्या करेगा तू. And now he's that person again. So how can average people, because ये तो clear है कि all smart people are not high performers. Is it clear? No. That See, all because अगर high performing, are we talking about high performers? Are we talking about high performance? I talk about high performance. Okay. और जब तुमने कहा कि ऑर्डिनरी, मुझे लगता है कोई ऑर्डिनरी है ही नहीं. ठीक है ना. हम सभी अपने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं पे बहुत जीनियस है, पर हम वो क्लेम नहीं करते. I'll give you an example of what I mean by ordinary. Say for example, I want to represent India in cricket. A Ranji player who wants to represent India in cricket, but वो कर नहीं पा रहा है अभी at this point. Doesn't mean he's average, but it just means that he wants to represent India in cricket, but वो अभी फिलहाल नहीं कर पा रहा है. So वो अपने दिमाग में सोच रहा है कि यार, am I not capable? Am I not, like, do I not have the skill set? Skill set तो है, तभी रणजी खेल रहा है. नहीं तो नहीं खेल रहा होता. नहीं है ना, क्योंकि रणजी लेवल का स्किल सेट और नेशनल लेवल के स्किल सेट में बहुत अंतर है ना. तो जब तक वो ये मानेगा नहीं,
So कोई ordinary, so I don't believe you're ordinary. We have the potential to become high performers. उनको डाउट नहीं होता, हाई नहीं परफॉर्मर्स को डाउट कभी नहीं होता. होता है ना, बहुत होता है. But the point is you sit down and you say okay. जब हमें डाउट होता है तो कई बार हम कहते हैं अरे मुझे करना ही नहीं चाहिए था. वो पूछेंगे ऐसा नहीं तो कैसे करना चाहिए था. It is about the thing and not about me. Got it. So flipping the mindset that way, flipping the perspective overall, कि अरे मेरे को नहीं करना चाहिए था shit versus like okay, I did this, went wrong, और emotions भी आएंगे. तो I always tell people let the emotional tsunami pass. Because जब failure होता है तो बहुत बड़ा tsunami आता है, हर किसी को आता है, and we can't like snap out of it just like that. But if we accept कि I'm gonna let this pass because I'm human, I will have all the reactions. Okay, पर एक point के बाद वो reactions settle होंगे, फिर मैं अपने आप को एक कहानी बताऊंगा about this. वो कहानी victim वाली है या hero वाली है? अगर वो कहानी victim वाली है then we have a problem. अगर वो कहानी हीरो वाली है then we say अच्छा okay ये हुआ, अभी ये करना चाहिए, ये मैंने नहीं करना चाहिए था. जैसे that's why Tendulkar, I remember this many years ago, somebody said Tendulkar watches every match and many athletes do, but he was the first person I heard about. Of course. कि वो बार लगातार अपनी खुद ही की बैटिंग देखे जा रहा है. क्यों? बिकॉज उतना ऑब्सेशन से जब माइक्रो चेंजेस होंगे तभी तो जीनियस बनेंगे, तभी तो हाई परफॉर्म. इट्स नॉट कभी कभार बन गए. It's not कि अच्छा खेले तो खेले. It's in the daily. In the daily. It's in the micro choices. It's not in the macro choices. Macro choices, like जो result आएगा वो आएगा. Because match में कई बार ऐसी चीज़ें होती है जिसका आपके कोई कंट्रोल ही नहीं है. सही बात है. और कई बार ऐसी चीज़ें आप कर देते हो कि आपको पता ही नहीं कहाँ से कैसे आ गया मेरे में ये. But that is only possible if you have done the daily. Okay? What is it that one should do? Every single day, are you casting a vote towards that future identity? मैं कहती हूँ फ्यूचर अवतार है, ओके, ये मैटर करता है मेरे लिए. बहुत सारी चीज़ें नहीं लेंगे, एक लेंगे. क्लैरिटी से एक, क्यूरियोसिटी में से एक चूज करेंगे, उससे क्लैरिटी से काम करेंगे. अभी मुझे कमिट करना है, तो कमिटमेंट का मतलब क्या है? कमिटमेंट मतलब ये अगर आइडेंटिटी है तो एक तो पहली बात, कैन आई कनेक्ट टू दिस आइडेंटिटी, फ्यूचर आइडेंटिटी एवरी डे फॉर 2 minutes? कैन आई डू दैट? बिकॉज मैटर करता है तो 2 मिनट तो निकल ही सकते हैं. मेरे फोन पे ऐसे 5-6 अलार्म्स है जस्ट टू, बिकॉज कई बार मीटिंग में भी फोन देख नहीं रही हूँ कई घंटों. सो आई वुड नॉट नो, बट आई हैव 5-6 जस्ट एज अ बैकअप कि दिन में एक बार तो पॉपअप आ ही जाता है जहाँ पे यू टेक अ मोमेंट, ओके नाउ आई हैव 2 minutes, जस्ट 2 minutes टू कनेक्ट विद दैट फ्यूचर अवतार. ओके, बिकॉज पहले तो गाइडेंस चाहिए ना. जीपीएस में अगर कहाँ जाना है वही नहीं पता तो गाड़ी चलेगी कहाँ? तो योर माइंड इज इनॉर्मस. It is very, very powerful, but it requires body to believe it. सिर्फ दिमाग में सोच के चीज़ें नहीं होती. Your body and your actions have to match it. You know, that's why people when they said law of attraction, शुरुआत में बहुत कुछ चला. एक पॉइंट के बाद उसका फेज थोड़ा कम हो गया जब लोगों को लगा कि मेहनत भी करनी पड़ रही है इसके लिए. पहले नहीं तो लोगों को लगता था मैं मन में मांग लूंगा कुछ भी आ ही जाएगा, right? But then they realize no, I have to be that person who can receive it, who can take it. फिर वो change हो गया पूरा conversation, and that's what we are talking about here. We are saying okay, एक तो mind को GPS की तरह set करेंगे हर दिन 2 minute. So alarm लगा लो, अभी phone निकाल के लगा लो कि okay, once or twice a day, I'm just gonna 2 minutes this step कि how does it feel to be that person? Okay, अगर 20 साल आपको बहुत बड़ा लग रहा है और ये बहुत impossible लग रहा है तो पूछो 5 साल बाद, 3 साल बाद, doesn't matter, time doesn't matter. What is that I want to do that matters to me? Because अगर emotion authentic नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. Right? That is true. So I think from a standpoint of when you mentioned time is not important, 3 years, 5 years, 1 महीने, 6 महीने, 8 महीने, whatever. Focus on who do you want to become. If I do all of this, सब कर लिया. So आज हम यहाँ है पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे आप ये बन गए जो भी आपको बनना है. अगर ये रोज चेंज होता रहेगा आपको जो बनना है तो जीपीएस चेंज होता रहेगा, गोल पोस्ट चेंज होता रहेगा, तो माइंड काम नहीं कर पाएगा. वही में आ रहा था कि कई बार बिकॉज इट्स आज ये करना है, कल वो करना है. तो क्योंकि लोग गोल डिसाइड करते हैं, मैं कह रही हूँ पर्सनैलिटी डिसाइड करो ना. मैं कहूँगी कि मुझे इस फोरम में बात करनी है, जिस दिन बात कर लूँगी काइट की तरह अचीव हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे. बट इफ आई से आई वांट टू बिकम दिस काइंड ऑफ अ स्पीकर,
then I will continue to work towards becoming that kind of a speaker. तो जर्नी चलती रहेगी. तो आई एम बिल्डिंग दैट पर्सनैलिटी हु आई कैन कैरी एनीवेयर एंड देन डू व्हाटएवर आई नीड तो टू डू. आज जो ये बात सुन रहा है, जिसको शायद वेगली क्लैरिटी है, उसको आज क्या करना चाहिए? एट दिस एक पॉइंट शुड चीज- दे आस्क 5 questions, 3 questions to themselves? Should they they follow should a tool? begin first. They should हाँ. ask themselves कि अगर ये फ्यूचर में जो भी करके मैं खुश हो जाऊंगा, वो इंसान कौन है और उसमें कौन सी 3 क्वालिटीज है जो मुझे पता है. जैसे आप ओनली पिक्ड 4 फॉर यू. Okay, you can also like then say, okay, no, I want this one, that's my core thing, impact. लोगों को मैं बताऊँ कि मैं जो कर रहा हूँ, इंस्पायर करूँ, जो भी है, whatever one thing you pick up, and then you say, okay, उसका क्या मतलब है? So then first, I will connect and I see myself this inspiring person in the future, which you will in your own context. Second thing you will do is you'll sit down and you will then say, okay, what is that one thing I can do every single day? So every daily. So how do I cast a vote? There's a book called Atomic Habits, right? So इसमें he speaks about, James Clear speaks about, हर दिन am I casting a vote? Am I taking small actions? Am I taking everyday action? जब वो everyday हो जाता है, एक तो वो जो अवतार आपको बनना है वो आपका everyday familiar हो जाता है, then your nervous system calms down. Okay, one. When you start taking action, your body calms down and it starts believing that I'm building towards it. What do we want? We want skill set and mindset. We want the body and mind to be on board with it. Correct. Okay? Correct. तब जब बिल्कुल. जाके सिचुएशन बदलेगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, then you have all of this that you can count on. Got it. और ये लोग नहीं कर पाते because they do not know that the mind can be trained like that. हम जब जिम में जाते हैं तो मसल कब बनता है? जब मसल पे उतना वेट डालो कि अभी मसल की कैपेसिटी खत्म हो गई है. नाउ इट स्ट्रेचेस इटसेल्फ लिटिल बिट. टू मच हो गया तो टूट जाएगा, नहीं हुआ तो मसल बिल्ड नहीं होगा. सो यू हैव टू गेट द मसल टू अ पॉइंट वेयर इट बिल्ड्स एंड देन यू आर लाइक ओके. देन इट बिल्ड्स एंड देन यू आर लाइक ओके. राइट? दैट्स हाउ. सेम विद योर माइंड. जब तक माइंड को आप सेम विद बॉडी, लाइक अगर मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है और अगर मैं इतने सारे लोगों के सामने, बॉडी गोज थ्रू इट्स ओन नर्वसनेस. सो इफ आई डोंट ट्रेन इट, if I don't train my mind and my body, then after a point it will break down. So basically training is also putting yourself in challenging situations, like simulating those एक things, discomfort. है ना, कि वो चीज़ें कर लो. मतलब if it really scares you कि यार चलो ये बनना है, ये करना है, उसके लिए मान लो अगर ये required है, तो put yourself in situations, है ना, and do something that really challenges that fear. And I've seen that happen with certain things that I've done, कि यार डाल दिया अपने आप को. Fear can't stand in an environment जहाँ पे आपके पास बहुत सारे solutions ही है. अगर मेरे पास fear है पर अभी डर लग रहा है, कैसे करेंगे, पर कैसे करेंगे पता चल गया, बहुत सारे तरीकों से पता चल गया. ओके, सारे टीचरों से सीखा, पॉडकास्ट सीखा, और मेरे पास पूरी लिस्ट है कि जब ये होगा तो इसमें से कुछ भी कर सकते, तो फिर डर नहीं लगेगा. जहाँ डर लग रहा है दैट इज योर गिफ्ट. वो हमें बता रहा है कि इसके आगे तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है दोस्त, काम करो इस पे. जब इसके लिए 10 सोल्यूशन मिल जाएंगे तो उसके बाद यू विल नॉट बी स्कैर्ड, राइट? देन यू विल बी स्कैर्ड अबाउट समथिंग एल्स एंड समथिंग एल्स. दैट्स हाउ लाइफ गोज अबाउट. पर हम वही तो कर रहे हैं ना. बचपन में 1+1 करने में डर लग रहा था, फिर 10th तक आते आते तो बड़े बड़े इक्वेशन से डर निकल गया, बिकॉज यू बिल्ड तो यार चेंज ही हो गया मेरे हिसाब से यार. I always thought math was numbers, then came letters, and then came X, and then came Y, and then came X's. Again. One of my core ideas why I wanted to discuss high performance essentially was the fact that I am so enamored by sports people, and I believe that their mindset is absolutely phenomenal. और मेरे हिसाब से sports से ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता. But I want to pause you here. Like, I know you're enamored by it, but I also feel like I have worked with different form of high performers. Some of them are like artists, some of them are writers, some of them are leaders and CEOs, business owners. मुझे लगता है कि high performance sports में बहुत score card की तरह दिखता है. Also the rules are very well defined. Correct. Okay? That is also true. So thereby you can say कि ये foul है और ये plus point है और ये negative और ये skill set है, और उसको you have like ways in which you can analyze it. Life में high performance दिखता नहीं है. Okay, so thereby you can't make out that clearly. Got it. But
everybody who crosses a level of excellence, I would say हम सभी में वो हाई परफॉर्मेंस का लेवल है which I call it pursuit of excellence. Okay. अगर कोई मम्मी अपने बच्चे के लिए कोई चीज़ सही करना चाहती है, you know, like my mom runs this very cute laddu business, we call it Ai Ka Dabba. Okay. And she makes only one ragi laddus, but she keeps perfecting it every single time. So when you look at like her commitment to do that, isn't it high performance? When a mother is trying to figure out with a little child how to communicate and get his emotion, isn't it high performance? When you're trying to get your presentation in a manner जहाँ सबको समझ में आ जाए, ऐसा एग्जाम्पल दूँ, ऐसी कहानी दूँ, so that I do it so that लोगों को मजा आए और समझ में आए. Isn't it high performance? So it's also when the rules are not defined. Yes. Yes, and most of the time because we fall into that gap जहाँ पे rules नहीं defined है, True. हमें वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, हम उसको हाई परफॉर्मेंस नहीं कहते, एंड दैट्स व्हाई वी डोंट टेल आवरसेल्व्स दैट नो आई रियली डिड समथिंग व्हिच वाज टफ, आई रियली लुक्ड फॉर द स्किल सेट, आई टैप्ड इनटू माय माइंडसेट, आई डिडंट गिव अप, आई एक्सपेरिमेंटेड विद 3 डिफरेंट थिंग्स. ये सब हाई परफॉर्मेंस. Can you give me some examples, because you've coached a lot of people? Can you give me some examples where they've done things that are obviously not defined? Say, for example, sports, and you rightly point out that sports में rules are defined कि ये foul है, ये नहीं है. Yeah. But since you've coached like thousands of people right now, can you give me examples of people who were at a low point and they did something and this really sprung up, and how, like, and they became high achievers, high performers, and how? So many stories. So Can you one give of me any of your yeah, favorites? yeah. So one of my entrepreneur, like a family owned business in publishing, this particular client has been doing it all his life, and this business went down, and during the lockdown completely shut down, bankrupt. Now he's like, what do I do? And every time he spoke to me, his eyes lit up when he would just speak about like flowers. And I'm like, flowers? And he would talk about everything, ये चल रहा है, वो चल रहा है, and it's flowers, and flowers. Like, and I'm like, what is happening here? I started pushing, and he said, no, that can't be my career. No, that. He had like all of these things about limitations because never done. And then at some point, because I could see the spark, he said, let me think. And he went and spoke to some people, and then he did research. Within 4-5 years, he built a wonderful premium floral brand. And I've seen that journey happening firsthand. And this is like in Vogue, and it is like in, like, you know, great places, and, you know, all these big events. And I go to these events, I'm like, oh my God, these are his flowers. Because at one point, he just like decided to twist the story from being like a biggest failure of his life to being like a new person, the identity that he wanted to build, and commit to that new identity. और दिमाग पीछे लेके जाएगा, बोलेगा पर तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने, and it's like, okay, then you're like, I hear you, I didn't do it, but I commit to this, I commit to this, I commit to this. Like, I went through a divorce when I was 29. Okay. My father passed away at the same time. So I did not know how to look at life, because you're like, okay, I'm a coach. I am a high performance coach. मैं ये सब सीख के आई हूँ, मैं ये सिखा रही हूँ, सब practice चल रही है तभी भी. And I started coaching people when I was 21. So touch wood, it just started very early. So 9 साल का already career बन चुका था. And it was amazing to do all of it, and then I failed. It so happened कि उसके बाद, और मुझे लग रहा था मैं किस मुंह से लोगों को कोच करूँगी. अभी मेरे लागा चुनरी में दाग वाला सीन मेरे दिमाग में चल रहा है. आई वेंट टू इटली टू स्टडी समथिंग, और वहाँ की जो टीचर थी, उनके क्लास में बहुत सारी ऐसी लेडीज़ थी, वो सिंगल, वर लाइक डिवोर्स्ड, सेपरेटेड, विथ किड्स, you know, like all weird situations, and they were amazing coaches. And I looked at these people, these women walking, and they were like 10, 12 years older to me, senior. As they walked, and they had like their own problems and their own challenges, and they just didn't have a shame attached to it. And मुझे पता चला, मैंने कहा possibility है ऐसे. In my mind, I created the Aditi then, 10 years future forward, and I'm like, no matter what happens, that is the kind of personality, that identity I want to build. Because I can have this story that I tried, this happened, that happened, or I say, okay, this scar, this problem, this challenge. और जैसे ही मैंने ये accept कर लिया, I came back and I started talking about being a divorced person. People are like, how are you talking about this? Oh no, are you not supposed to hide it? लोगों ने मुझे ये तक बोला, अरे लगता नहीं तुम divorced हो. And I'm like, what do you expect?
मतलब कैसे लगी कि मैं टी-शर्ट बना के घूम या फिर टी-शर्ट पहन के लोगों को घूम ऐसे उम्मीद होती है कि अरे डिवोर्स है तो एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 10-12 या years ago, ऑफ right? कोर्स ऑफ कोर्स So I went to many cities in India. Like I went to Surat, I went to Hyderabad, smaller cities, and I conducted sessions which were about this topic. And people just felt liberated because instead of hiding shame, you accept shame. And you say, okay, here it is. I did it. I failed. I wish I could have done differently. I learned a lot. But I show up. But I show up. But I show up. I show up. And I publicly speak about it even now because I'm like, ऐसा नहीं है कि आप में एक गलती हो गई तो you lost it. Absolutely. You show up, you bring it back, and you show up to the game. Eventually, we don't remember that Virat was missing for so many years. We remember that he came back. So if you are willing to come back in your life, you'll do a lot of things. One of the causes why people are not able to perform or why people are not able to get back in the game after certain incidents have happened in their life is because they're not able to stay calm under pressure. Yes. पर मैं थोड़ी सच्ची कड़वी बात बोलती हूँ. बताओ. कई बार वो जो कहानी है हमने बनाई हुई जहाँ पे हम दुखी है, हम बेचारे हैं, it is more comfortable to repeat that story and be बेचारा Then actually take action. yes because it's like constantly मैं सब कुछ कर सकता हूँ पर and if you really look at it, this is Carol Dweck's work. She wrote a book called Mindset and she says जब हमारा mindset fixed हो जाता है, किसी चीज़ पे अटक जाता है या हम अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो कई बार वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम फिक्स्ड माइंडसेट which doesn't allow you to grow. Okay, if we want to grow, we have to activate certain curiosity, questioning, discomfort for us to grow. अब मुझे पता चला कि मेरे रिसर्च में कि किसी का पूरा माइंडसेट फिक्स नहीं होता, किसी का पूरा ग्रोथ नहीं होता बिकॉज वी कीप स्विचिंग. समटाइम्स वी नीड अ रेसिपी एंड समटाइम्स वी नीड एक्सपेरिमेंटिंग. सो आई क्रिएटेड दिस टेक्निक कॉल्ड ग्रोथ मोड ऑन. Talk about it. I've been seeing a lot of your work around it. So talk about what exactly is. So if I want to walk into a situation जब मुझे पता है कि मुझे अभी नहीं आ रहा है, okay, ये नहीं पता. And all of this started because lockdown में I was driving to my yoga class जब lockdown खुला ही था सब सन्नाटा, सारे roads एकदम clear. सुबह मैं जा रही थी, गाना वाना सुन के जा रही थी, रैप नहीं सुन रही थी तब. I was listening to a beautiful Indian classical Marathi song. Okay? तो मैं जा रही थी और suddenly एक गाड़ी चल रही है सामने से, उसने बीच में ही गाड़ी मेरे लेन में आ गई. And I got like, what is this? And in between, you're not ready for traffic, nothing. So I got like startled. और मैंने गाड़ी उसके बाजू में लेके मैं डांटने वाली थी उसको कि क्या है, ध्यान रखो. And I saw L sign का board. Got it. And the very moment I saw the L sign, I'm like, अच्छे से चलाना. And I took the car. I gave him space, and like other people also gave him space to drive because नया driver है भाई. Okay, whatever, right? Now after I came back home, मैं सोच रही थी, मैंने कहा क्या change हुआ? In that moment, I'm like, ध्यान रखना चाहिए. To अरे ध्यान रखो. That shift happened because he announced that I'm learning. Correct. I'm like, ऐसे growth mode हम क्यों नहीं कर ले रहे? हम क्यों नहीं L sign पहन के बता रहे कि हाँ, I am learning right now or I am growing in this field. I don't know, but I want to figure this out. I'm willing, I'm committed, I'm doing this, I'm doing that. और अगर हम ये सब कर ले, हम ग्रोथ मोड ऑन करके अनाउंस कर दे लोगों को या फिर एक दो लोगों को, जो भी हमारा सिस्टम बनाए, knowing that I am walking into a discomfort where I don't have a solution, we will never be this hard on ourselves. How do you activate growth mode? I believe because I believe कि body is the best way to activate your emotions and your mindset. I have created many techniques which are body based. Okay, it also comes from my training in yoga and everything else. Of course. So I ask people to tap their left leg, right leg, and then switch on like a button. Okay, so Let's tap do it. as in tap the floor. Yeah, tap the floor with your right leg first. Right leg first. Right leg, tap. हाँ tap किया. Left leg. हाँ. और फिर ग्रोथ मोड ऑन. से ग्रोथ मोड ऑन. ग्रोथ मोड ऑन. अच्छा बोलना भी है. अच्छा मैंने बोला यही प्रोसेस कर. ठीक है फिर से करते हैं एक बार. राइट लेग सिंगल टैप है कि डबल टैप है पूरा बताओ ठीक से बताओ. So generally I also stand up and do it,
but I don't want to change the setting हाँ, right now. stand up we'll do later हाँ, once okay. this is done. So when हाँ, you stand, you just like tap. Basically, आपका जो foot है, हाँ, आप tap करो. हाँ, And ठीक I'll है, tell you the reason why we do it like this. ठीक है, Right leg, right leg, left leg, left leg, growth mode on. growth mode on. ओके ठीक है, अब या अगर फिजिकली खड़े रह के करेंगे तो हम राइट लेग लेफ्ट लेग ऐसे वो स्टेप्स लेंगे हम हाँ और समझ अगर गया, हम हाँ, बैठे हैं तो हम विल जस्ट डू लाइक दिस और अगर हम किसी मीटिंग में और हम ऐसे नहीं कर सकते सो विल जस्ट मूव लाइक वन टो राइट लेग लेफ्ट लेग ग्रोथ मोड ऑन got it. And Right, what is because- this doing? so what we are telling our mind through our body activation when you use you're using both legs and your temple so you're activating your whole body Okay. ओके पूरा सिग्नलिंग कर रहे हैं हम लोग कि राइट लेग लेफ्ट लेग ग्रोथ मोड ऑन वी आर टेलिंग योर बॉडी बार बार कर करके यू विल गेट इनटू दिस थिंग कि जैसे एथलीट स्टार्ट अ स्पोर्ट्स मोड ऑन एंड व्हेन दे आर डन विद देयर मैच दे कम ऑफ दैट स्पोर्ट्स मोड उसी नहीं रह सकते हम लोग वी नीड लाइक अ इंटरवल जहाँ पे हम कहीं जाए कुछ करें और वापस आए ओके ये इंटरवल हम हमारे माइंड को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नाउ आई वांट टू स्विच ऑन अ ग्रोथ मोड that means that whatever I do, I'm going to be curious. I'm going to ask questions. I'm going to accept whatever is happening, but I'm going to find a way to challenge myself. ये जो हम अभी से कह रहे थे अभी जो भी चीज़ है आज के एपिसोड में अगर मैं उसको ब्रेक डाउन करूँ और हम जो क्यूरियोसिटी वाली बात है यू नो वी सेड क्यूरियोसिटी क्लैरिटी कंसिस्टेंसी नो क्यूरियोसिटी क्लैरिटी कमिटमेंट Consistency. ओके ये सारी चीजें हम करना चाहते हैं बट वी आर सेइंग वी आर नॉट डूइंग इट थ्रू आउट Correct. only for next 1 hour I'm going to switch on this growth mode and just look at this problem differently okay Okay. जब मेरा हो जाएगा then I'll switch it off because पूरा टाइम वो चालू रखना दिमाग It's वैसे is also very very scary tiring. हाँ. scary I don't know what will happen हम लोग ओके 1 घंटा बिना सोचे कर सकते हैं क्या फेल्यूर के बारे में नहीं सोचेंगे सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे 1 घंटा 15 मिनट So when you start doing it small intervals, your body and your mind starts realizing कि इतना difficult नहीं है, करके देख सकते हैं, okay? 15 मिनट आगे जाके वापस आ सकते हैं. Got it. So when you create evidence, your mind starts breaking the fear. Oh. Evidence के बिना बस मान के fear तोड़ना बहुत मुश्किल है. If I know something is happening or if I have something to see and also I give myself permission growth mode में अगर मैंने गलती कर दी एक्सपेरिमेंट करी हो ना गलती so growth mode का क्या मतलब है that I am going to choose solution orientation over problem orientation कि फिक्स मोड में नहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और यहाँ करें ओके प्रॉब्लम आएगी पर सोल्यूशन क्या हो सकता है सोल्यूशन क्या हो सकता है सोल्यूशन क्या हो सकता है आई एम कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग माई माइंड टू गेट टू सोल्यूशन यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्यूशन सो ये जो शिफ्ट है बिटवीन प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ये फिक्स मोड और ग्रोथ मोड का डिफरेंस है ओके अगर आप सर्जन हो तो यू हैव टू बी फिक्स मोड पर्सन बिकॉज हम चाहते हैं कि आप प्रोसीजर फॉलो करो आप पायलट हो तो प्लीज प्रोसीजर फॉलो करो ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करना तो वहाँ पे फिक्स मोड रेसिपी टेक्निक SOP इज वेरी इंपॉर्टेंट So for me, sometimes because my mind doesn't allow me to follow sequences, I would say abhi fix mode on. You're just going to follow what is told to you because you're learning something new. You have no clue about it. So यहाँ पे मैं fix mode से train कर रही हूँ अपने आप को एक ही चीज़ में बार बार. For precision can be done. For perfection can be done. पर ये स्कूल में जब आप बहुत ही एक सिलेबस में इवन गेम्स में कई बार काम करता है कि आपको वही करना है लाइफ में इतना कोई रूल बुक नहीं दे रहा है ना सही बात है तो आपको कुछ नया करना है कुछ अलग करना है सिचुएशनली यहाँ जो ज़रूरी है वो करना है अगर आप बहुत अच्छे भी हो तो भी अगर इस रिलेशनशिप में चल रहा है पर उस बॉस के साथ नहीं चल रहा है उसको तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट बट वी कैन नॉट थिंक लाइक दैट बिकॉज वी आर लाइक सब तो कर लिया सो लाइक ओके सो नाउ आई वांट टू गेट इनटू दिस आई एम लाइक और क्या हो सकता है और यू विल बी सरप्राइज जब आप अपने दिमाग को पूछोगे और क्या हो सकता है योर ब्रेन विल से अच्छा ऐसा कोई पॉडकास्टर है क्या ऐसा कोई बुक है क्या ऐसा कोई तो आवर माइंड इज लाइक अ गूगल सर्च अगर आप कहोगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है देन इट विल गिव यू ऑल रीजन ऑफ क्यों हो रहा है अगर आप कहोगे कि ये हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए इट विल गिव यू ऑल द रीजंस सो मेनी ऑफ देम पर ये हम स्विच ही नहीं कर पा रहे तो व्हेन आई गिव दिस इंस्ट्रक्शन एंड आई वी वर डूइंग आई वाज स्पीकिंग एट रॉयल ओपेरा और वहाँ पे ब्रेक में हमने कहा कि हमने वो पूरी इवेंट में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह आए थे मैंने कहा आपको मैं चैलेंज करती हूँ आप
3 लोगों से जहाँ पे भी आपको लगे कि एक चुटकी डिस्कम्फर्ट है इससे बात करने में, then you will gonna go to that person and say right leg, left leg, growth mode on. और आप उनको पता चल जाएगा कि आपको नहीं आ रहा है, आपको डर लग रहा है, पर आप वो लर्निंग साइन पहन के करना चाह रहे हो. People went and they spoke to celebrities, they spoke to everybody they thought were uncomfortable. 3 people, only 3, because एक चुटकी डिस्कम्फर्ट. नो कुछ करके जब वापस आके हम कहते ओके आई डिड इट, हो गया, अभी मैं उसको देखूँ कि क्या अच्छा हुआ, अच्छा नहीं, ये गलत हो गया. ये सब हो सकता है इफ़ यू नो इट्स फॉर टाइम बीइंग. अगर हमें कैसे डिसाइड करते लोग कि पूरा 1 महीना करूँगा, अभी 1 साल करूँगा, नहीं, थोड़ा सा करके देखते हैं, फिर वापस आके देखते कि जम रहा है, अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, फिर वापस करेंगे. Got it. I think it's a very interesting way. मतलब, I would love to try it on Please. going forward Please. in the next couple of days. And anything and everything where you feel discomfort already, वहाँ यूज करके थोड़ा सा. But ये calmness under pressure कैसे किया जाए? Because a lot of these people, and I think that's a skill set to have. कि यार to be calm under pressure. कि यार चल ठीक है, these things are not working right now. Maybe in the context of a match or a presentation, or going just before you go up on stage. Fighting with your girlfriend. I can't relate. I will move on with that. But anyway, I think anything in any context whatsoever, जहाँ आपको लोग डरा रहे हैं या डर लग रहा है आपको, जहाँ जो नॉर्मल सिचुएशन जो डेली में नहीं होता है. अभी मुझे बताओ अभी क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हो मतलब? How are you like being calm under pressure? What do you do? मैं तो बैठा रहता हूँ शांति से, चुपचाप सांस लेता हूँ, ब्रीथ करता हूँ, मेडिटेट करता हूँ. Okay, so now सिर्फ बैठे रहे तो दिमाग हर जगह जाएगा. But you said I do breathing technique. हाँ. Okay, so you use your body to kind of go through a certain pattern that allows your mind to thereby come along. Okay, meditation का भी वही technique है. Mostly people think meditation is about being thoughtless. Most right form of meditation, especially Indian form of meditation, will give you a technique that will take you to a deeper level of consciousness. Correct. और जहाँ पे आपको solutions, मतलब your mind just goes through a different process. Now again, leading with body. So I have this one line where I say, when your mind is helpless, lead with your body. Okay. No, sorry. When your body is helpless, lead with your mind. Okay. When your mind is useless, lead with your body. So जब हमें टेंशन होता है, your mind is coming up with all of these things for survival. And that's not very helpful. So what do you do? And this is the technique I would like to teach you. Okay, please teach me. As I mentioned, I'm a student and you're a teacher. So start with a ballpoint pen. Okay. It's a simple diary, just to show it to the camera. It's a simple diary so far is what I can see. आगे मैं खोल नहीं रहा तो पता नहीं. But हाँ, this is a diary and we have a ballpoint pen. And you have a ruled diary. Ruled diary. Okay. Always never like a blank page, not like ink pen, nothing. These rules are important because ये technique काम करने के लिए you need enough pressure and enough lines on the paper. Got it. Okay? ठीक है. अभी जो technique के 5 principles है, 5 rules है और दिखने में बहुत simple लगते हैं, पर जब तुम करोगे तुम्हें पता चलेगा. So the stroke I will show you how it looks. What are we doing this for again? We're doing this for like staying calm. So this is how it looks. Okay, I'm going to use a blue pen because I think it will be better for. Okay, this I call calmness S stroke. During the lockdown, I started an initiative for people who are feeling anxious. और तब मेरी सोशल मीडिया की फॉलोइंग थी कुछ 1500-1200 लोग. तो मुझे लगा 50 लोग भी आ जाएंगे तो बहुत ही. I would do whatever, I will show up, I'll do my part. करते करते 40,000 लोग in the 3 years that we continued this initiative learned this stroke, taught it to their kids, to their parents, to their family members. And when lockdown was causing all that anxiety where we didn't know, people use this technique to use the body to calm their mind. Okay. So after testing it with like random people who had never I spoken to, उनको ना मैंने growth mode सिखाया ना कुछ ना सिखाया, सिर्फ ये technique करके body के जरिए they could install calmness. Okay. And then the same thing where they felt all over the place, they could not feel like that because the mind was just not able to get to that speed. Got it. Okay. So इसका 5 rules. First, you start always on the top. So you don't start
like this. Okay. Okay. Then when you go about it, you end or try to end it on the line. Okay. Okay. If you can't, I'll tell you what to do, but if you try to. Okay. अगर आपके पास ऑप्शन है ऐसे क्लोज करना और ऐसे क्लोज करना, तो you'll try to end it on the line. ठीक है. Okay. Third, all the loops will be open. So you will not do this. You'll always make sure that all the loops are open. And the top and bottom are touching the lines. So that is a mandate? No, it's like this. Bottom touch होना चाहिए. Bottom touch होना चाहिए. The depending on your handwriting size, you will do it differently. But both of them are okay. ठीक है. This is also okay as long as the loops are open. ठीक है. Okay. The fourth point is if you're doing this practice, if it stops, you simply pick up the pen and you start again. Okay. You don't try to, okay. You don't do that. Okay. You got to just find the flow and wherever it stops, you pick up the pen. अगर वो बीच में ही रुक गया, तो you pick up the pen, you start again. किसी को हमें impress ही नहीं करना ना इसमें. Fresh कर रहे हैं हम इसको. Fresh कर. For example, अगर मैं यहाँ अटक गया, am I not continuing from where I paused? I'm starting afresh. You accept a mistake, and you say that's fine. Okay, got it. I start again. Got it. Oops, I did it again. No problem. ठीक है. I start again. ठीक है. So that whole technique of like even if there's a biggest mistake, I start again. Got it. Now these 4 points, start on the top, try to end on the line, make sure all the loops are open and flow. Continue the flow. If you stop the flow, ये 4 main point. पांचवा सबसे main point is when you do this practice, you try to breathe slightly deeper than your current breath. Not like managing, and this is we are not syncing these. Okay, we just try to breathe. I'll tell you. Try to breathe slightly deeper. Okay, रुक गया वापस. So when my breathing gets slightly lower, my attention is on these 4 points. My mind has all these tasks in this one given moment. All of it becomes a concentration. अगर आपने सीख भी लिया और आपको बहुत fast भी आ रहा है, the idea is to keep the breath deeper and keep focusing on all these 5 points. And then over a period of time, your mind has to follow the rhythm. Got it. Okay. Yeah, and और ये S क्यों है? Why is it just specifically S? Can it be something else also? उसके पीछे कोई logic है? हाँ, इसके बहुत सारे reasons हैं. This particular form, I have done multicultural research कि image कहाँ से आ रही है, symbols कहाँ से आ रहे हैं वो सब. But eventually to simplify, there are knots on the top and there are knots at the bottom of the stroke. Problem. So for example, there is a knot which for your mind is considered as a problem. You solve. Got it. Okay. So every knot in getting out of a knot becomes like a signaling, but that's not the only reason. Got it. इसके बहुत सारे neurological, graphological, बहुत सारे reasons हैं. Right now, the technique, because it is simplified, it is how it looks like. What are we doing? Calmness and stroke. ठीक है, calmness and stroke कर रहे हैं. Okay जी. Very nice. अभी रुको. ठीक है. Now if you really look at it, you started on the top, great. You ended on the line, great. Now all the loops are here not open. Okay. So whenever we realize कि नहीं हो रहा है, तो we'll change it. Also, right now the stroke is going थोड़ा टेढ़ा. So we'll try to keep the formation थोड़ा सा सीधा. Okay, got it. So एकदम प्रिपरेशन चल रही है. आज तो काम हो गए रहेंगे. Is this better? So much better. Okay. So now we still have some of the loops off. जहाँ पे भी off हो जाए हम रुक जाएंगे. ठीक है, got it. We'll do again. Very nice. Good job. Pause. अभी ये सब करते वक्त तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है ना, that is your observation.
मैंने कुछ नहीं चल रहा है अभी. Like for example, no, that's not fully true because if you're doing it, you're like और थोड़ा अच्छा adjustment. ये whatever you're doing with this. हाँ मतलब I'm not thinking about anything else. No, is what no, I'm trying to say. about this. हाँ. जो भी चल रहा है. हाँ. कि you're like oh no ये इसका ये ऐसे Correct. ही हम लाइफ सिचुएशन में भी काम करते हैं. Oh. It doesn't matter कि आप कितनी बड़ी सिचुएशन और प्रॉब्लम या टेक्निक लेके अपने आप को एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. You can find the smallest thing and you can experiment with how your mind relates to it. अच्छा, ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग टेक्निक लग रहा है यार. It's wonderful. है ना? ये देखो ये था पहला वाला. 1 2 3 4 5 ये 5th आइटरेशन है. And already like you have to be fully there for it to work. और जिस दिन दिमाग आपका नहीं चल रहा है, बहुत ही बिजी चल रहे हो, ऑल ओवर द प्लेस है और बहुत कंफ्यूजन सा लग रहा है, होता है ना कई दिनों में you wake up and you're like बहुत सारी चीजें चल रही है. Those are the days where like I would do it every day because मेरा dyslexic दिमाग बहुत ही अच्छे से काम करता है. Got it. So when you do this every day और इतना ही पेज करना है आपको, you don't have to like really try to do a lot, this much. अच्छा It's इतना. micro training. वो माइक्रो ट्रेनिंग कर करके जब आपकी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी, बहुत ही डर लगने वाली सिचुएशन होगी, you'll realize your mind has a pause before Yeah. it acts. Got it. Which So makes this it is- so much easier when you don't react but Yes. respond. All of that is available. हमें समझ में तो आ रहा है, पर हाँ. in the moment कोई बोलते ही ट्रिगर होते ही we just react. But अच्छा, so if this is done on a regular consistent basis, At least it 21 becomes days. a muscle. Yes, at least 21 days. But I have people who have been doing it for 13 years, 12 years because life simple हो रही है. If I can just and I can take more load if I have done this. I Got can it. because what is so called decision making, all of it. मुझे अपना thought पता चलना चाहिए before I act on it. Correct. In the moment. If you're a very good, like I love driving on the highway. और अगर आप हाईवे पे हो और अगर बहुत हाई स्पीड में चल रहे हो, in that moment if something happens, if you have control that time without panicking, then you're a good driver. Correct. अगर वहाँ पैनिक कर गए तो क्या ही फायदा, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा चलाना हो, सब कुछ है, एसी वैसी गाना वाना सब ठीक है. But in that moment if you panic, then the game is off. And only you know. हमें किसी को प्रूव नहीं करना कि हम कितने काम है. None of it. It's just that moment before I react. Do I have a thought? Do I have a possibility to make a different choice? अगर नहीं हो तो मतलब मुझे calmness पे अपने आप को train करने की ज़रूरत है. This is one of the techniques through which is my compulsory mind becomes- technique with every high performer I ever work with. मैं उनको कहती हूँ अगर ये नहीं कर सकते तो please don't tell me to coach you only. makes sense. Is there a criteria when you take people? Do you have like a questionnaire and stuff? Questionnaire also they go to a small interview process where I Got need to it. make sure because मुझे लगता है अगर मैं किसी को भी coach कर रही हूँ तो it is a both way journey. True. So it is not like only मैं ज्ञान दूंगी, like whatever you bring to, I will learn and I will teach and I would go back and I would experiment. So life के 3 महीने 6 महीने we both gonna contribute to each other. So if you're not committed, And is once a high performer always a high performer या वो cycle dip भी हो सकता है? what you said was correct. It's not high performer, it's high performance. So is once a It's high a choice. Ah. It's a choice. That's why people who do very well can also do very bad and then they can jump off. But it's about high performance. It's a choice. But Aditi, thank you so much. This was the conversation. Thank you so much for the conversation. I enjoyed it thoroughly. I think थोड़ा तो mindset shift हुआ है conversation से ही, which is the starting point to something bigger. And to the audience, if you liked it, please drop a comment. Outro आप कर दो, आप बताओ शो पे आके आपको कैसा लगा, and if you repeated any conversation whatsoever or what were your thoughts from this episode on that camera, बता दो. मुझे ऐसा लगा कि it was like a real conversation. And whatever you're trying to do, if we see you like this, we understand कि इसके ये डर है, इसके ये challenges है, ये सीख रहा है. And I think very few people get to do that and very few people choose to do that. So that was refreshing. I absolutely loved that. और वो authenticity वाली बात मैं खुद याद रखूँगी. And I would be like, okay, there was one person who's crazy enough to be authentic enough on social media and real. So that was wonderful.
So I loved being here. Beautiful. Thank you so much. Thank you, thank you. Drop a comment. You know the drill. Watch out for a fresh new episode every मैं Friday करने at 6 वाली थी p.m. ये। अच्छा आप कर लो, हेलो। ठीक है, करो नहीं नहीं करो। अभी तुम करो। करो नहीं, आप भी पॉडकास्ट करो, आई विल सी योर आउटरो, करो। अभी मुझे नहीं आप पता क्या करो, अब आप 6 PM 9 PM क्या चल रहा है वो नहीं पता 6 p.m. Friday, every Friday 6 p.m. we come go live with a fresh new episode. क्लिप्स चैनल हमारा है, वहाँ पे क्लिप्स और शॉर्ट एपिसोड आते हैं। और फॉलो अदिति ऑन टिंडर, बम्बल, इंस्टाग्राम। नहीं इंस्टाग्राम लिंक्डइन, सिर्फ इंस्टाग्राम लिंक्डइन। ये है मेरा आउटरो। आप कर पाओगे ये आउटरो? नहीं कर पाओगे तो ट्राई करोगे तो कर लोगे। चलो, आई कोई जस्ट रिक्वायर सम माइक्रो स्किलिंग। वो नहीं हो पाएगा। But lovely being But yeah, this was fantastic. Thank you so much Thank you. for being on the show. Thank you so much for tuning in. Outro vlog में हो ही गया है। जाते जाते सब्सक्राइब कर देना। And thank you so much. See you same time next Friday 6 p.m. Till then, it's a wrap. Thank you so much for watching. Cheers.